वेलकम बैक टू another episode of Sukhan Unplugged. जैसा कि आप देखते आए और हम देख रहे थे कि वी आर फाइनली बैक विद इन-पर्सन एपिसोड्स एंड इट गिव्स अस अ ग्रेट चांस टू मीट सम अमेजिंग पीपल. और इसी सिलसिले में आज वी आर लकी अगेन एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर अली खान विद अस. सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. डॉक्टर अली खान को पहले को बताते चलें, ही इज़ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड डीन ऑफ मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज एट लम्स. He has an MPhil and PhD in social anthropology from University of Cambridge. But generally आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, before people think it's some very academic serious discussion, no, we are going to talk about cricket. So now you don't have to skip the video and we'll move on to the fun part. So Dr. Ali ने recently उनकी किताब आई है, इसका नाम है Cricket in Pakistan, and we're going to talk about this, and I'm going to take this opportunity to get to know some insights of Pakistani cricket, because Dr. Ali comes from a family that has served not only Pakistan but Pakistani cricket in a great capacity. Or I'm sure he has some stories to tell us about some players. So कोशिश करेंगे कुछ scoop निकाल के उसको clickbait बना सके. But सबसे पहले sir, thank you once again for being with us. It's a pleasure to be here. I'm so happy to have this opportunity. Sir, I think मैं start clickbait से करता हूँ फिर, but generally because you have been exposed to cricket at a very young age, because फिर आपके father की फिर postings की वजह से at the highest level he was chairman of Pakistan Cricket Board. So some interesting anecdotes, some interesting memory, कोई ऐसी inning को match जो आप जो कहते हैं कि that was the point where I fell in love with cricket. Oh, I mean, it happened a long time before my father became involved in cricket. क्योंकि उससे पहले तो वो foreign service में थे, तो as a result we were in many different postings, but mainly the important one was England. So England में the earliest I recall is actually going to a match and watching Pakistan playing. I think Majid Khan खेल रहे थे उस वक्त पे. I was very small at the time, but my father was with the High Commission, so he was a cricket freak. हर मैच पे जाते थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे, and because he was with the embassy, तो मुलाकात होती रहती थी players से भी. So I started playing when I was 5 or 6. I had 2 elder brothers, वो भी खेलते थे. तो नेट्स भी हो रहे हैं, मैचेस भी जा रहे हैं, लॉर्ड्स पे जा रहे हैं, ओवल पे जा रहे हैं. So it started much before he became involved officially in the administration of cricket. So it was always in the family. But sir, when obviously you were involved, तो फिर एक different तरह का exposure था. So you got to meet a lot of players and officials and everything. So how was that experience? So I mean, then you skip forward a long way, and for me the most memorable experience was 2003 में जब India आई थी. And I think my father had just taken over at that time as chairman of the cricket board. और वो एकदम हुआ था, वो tour जो था, it was happening, not happening. फिर एकदम India की government ने कहा कि we give the go ahead. तो literally PCB के पास कोई 1 महीना था to prepare for what was a massive tour. India hadn't come for many years. तैयारी करनी थी, कद्दाफी स्टेडियम को तैयार करना था, नेशनल स्टेडियम को तैयार करना था. देयर वाज अ होल वो सिक्योरिटी एपरेटस जो था, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो इट वुड हैव स्पार्क्ड अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द 2 countries. तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी इन्वॉल्व्ड इन सीइंग कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और टीम कैसे बन रही है इन टर्म्स ऑफ पीसीबी की टीम और अपनी टीम जो थी. इंजमामुल हक कैप्टन बन गए थे. And it was an amazing effort by both the Indian board and the Pakistani board. लेकिन वो tour इतना अच्छा गुजरा था कि I'll always remember it with very fond memories. I met a lot of the cricketers, and I have to say कि the Indian cricketers were real gentlemen, all of them. Receptions पे जब आते थे, they would make an effort to speak to people. There was no arrogance on their side. They were actually happy to be here. ख़ास तौर पे जब कराची का मैच हो गया ना, थोड़ा जो वो टेंशन था ना वो कम हो गया. So I remember इस्लामाबाद में I think we were meeting with them, और वो they were really excited about going to Peshawar. कि उधर किस्सा खानी बाज़ार में जाएंगे, चप्पल लेंगे. और मुझे याद है कि ज़हीर खान he was really कि उसने जब सुना कि वो कबाब उधर कैसे होते हैं तो ज़हीर खान ने कहा कि मुझे तो जाना ही जाना है. The others of course were, many of them were vegetarian, लेकिन ज़हीर खान तो बहुत ही. So that was I think a really memorable opportunity for us.
There's a great story about Ganguly sneaking out of his hotel as well in this book, but obviously I'm not going to give it away. But sir, coming to your book, so basically, if I'm to understand it correctly, there are two main themes. अगर हमारा पहला थीम की बात करते हैं, so that's how cricket has been affected by the general evolution of the country, social, political, economic, and then the impact of cricket on the country. Yes. So there are the two different things. जी. So starting with the first one, for example, अब आपने secondary research भी की और obviously आपने talked to a lot of people as well. So how do you see the evolution of game in the country? हाँ, so इसमें जो सबसे वाज़ेह चीज़ है, that is how the game has changed particularly since the 1970s, late 1970s. उससे पहले अगर आप देखें, you can see that there's one statistic that 80% of all cricketers up till the late 1970s in Pakistan came from either Lahore or Karachi. Right? तो इसका ये मतलब है कि the sport was very contained. या तो आप लाहौर से आएंगे या आप कराची से आएंगे. And then it begins to grow. And it grows for a few reasons. एक तो टीवी की वजह से और लोग देखते हैं. Secondly, ग्राउंड्स बन जाते हैं आपके, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू पीसीबी दैट कि ग्राउंड्स फैसलाबाद में बन गया, मुल्तान में बन गया, यू हैव स्मॉलर ग्राउंड्स शेखुपुरा में बन गया, सियालकोट में, गुजरांवाला, एंड 87 में ये इन ग्राउंड्स पे आप खेलते भी हैं. बट इवन बिफोर दैट वेस्ट इंडीज़ केम, आई थिंक 70s में, तो वो आई थिंक सक्खर भी गए थे, साहिवाल गए थे. सो एक्सपोजर हो गया था. मुश्ताक अहमद सेज कि मैंने विवियन रिचर्ड्स को देखा था in Sahiwal, I think. So that exposure grows, and the game begins to spread as a result. एक और चीज़ है, वो ये है कि by the late 70s the team is becoming successful, and a successful team will attract more people. 70s में तो आपके superstars हो गए थे, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, माजिद खान, these were not only पाकिस्तान के, जावेद मियाँदाद, ये तो इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हो गए थे ना. एंड ऑल ऑफ दीज पीपल दे प्लेड देन इन वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट. तो इसकी वजह से यू सी अ चेंज स्टार्टिंग इन द 70s. अब आप अगर आगे जाएं तो देन सडनली पीपल आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलर सेंटर्स. कराची और लाहौर से इतने लोग नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा कम हो गया उसका इन्फ्लुएंस. You go to Shekhupura, you go to Sahiwal, you go to Gujranwala, you go to Burewala Express. तो ये लोग smaller centers से आ रहे हैं. And they're also coming from different backgrounds. पहले तो आप school system के through आ रहे हैं, university system के through आ रहे हैं. But now you've got the son of a night watchman, you've got the son of a railway worker, you've got someone who's from an agricultural background. उनका जो इनकम लेवल इज़ मच लोअर देन पीपल हु कुड अफोर्ड टू प्ले फ्रॉम लाहौर एंड कराची. तो ये एक बहुत बड़ी चेंज नज़र आ जाती है आपको, एंड दैट रियली बिगिंस टू टेक ऑफ. आप देख लें कि जी बाय 2003 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज़, द कैप्टन इज़ द सन ऑफ अ प्रेयर लीडर, जो पहले कभी नहीं हुआ था. वी स्टार्टेड विद कारदार साहब जो ऑक्सफर्ड के थे, इमरान भी ऑक्सफर्ड के थे, द अदर्स वर ऑल फैली अर्बन जेंटलमैन. तो ये चेंज आ गया. और देन अदर बिग चेंज केपी. अब तो आप टीम देख लें, 70% आर फ्रॉम केपी, और केपी से कोई खेलता नहीं था एक वक्त पे. यू हैड पीपल ऑफ पख्तून हेरिटेज, इमरान हो गया, माजिद हो गया, बट अमंग्स द अर्लियस्ट में भी अरशद खान था वो. बट दिस वाज अ ह्यूज चेंज कि केपी में जो टेक ऑफ हो गया. सो नाउ यू गॉट Waziristan, you got Ladkana, you got Hyderabad. So that for me shows how much the game has grown and how much it is much more reflective of Pakistan. सर ये एक स्ट्रगल, दो बातें मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा. एक जो आपने एक जो हमने यहाँ बात की थी, जब इकोनॉमिक क्लास की बात करेंगे, अब आई वॉन्ट टू नीश टर्म एलिटिस्ट क्लास, बट उस टाइम में उस क्लास से कुछ लोग आ रहे थे. सो इन अर्ली हिस्ट्री भी आप देखेंगे थोड़ी सी टसल नज़र आती है. हनीफ मोहम्मद मेक्स दैट आर्गूमेंट कि ये एक ही तरह का ग्रुप की जो है वो है, एंड दे डोंट वांट एनीवन एल्स टू टेक द कैप्टनसी. Towards his retirement, he became a bit bitter, and he wrote about it as well against Kardar primarily, but not naming anyone, but generally saying कि शायद उस टाइम भी grievances लोगों की थी, and maybe the system didn't let anyone come
कैन वी मेक दैट आर्गूमेंट, या जिसमें आपने सारे जिनका जिक्र किया है उनकी वजह से ही ग्रेजुअल डेवलपमेंट ही होनी थी? नहीं, देखिए, यू कैन मेक दैट आर्ग्यूमेंट, लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है टू आयरन देम आउट. सो यू नो, आई मीन, हनीफ साहब के टाइम पे आई थिंक देयर वाज, यू नो, शुरुआत हो रही थी, एंड देयर इज़ ऑलवेज रेजिस्टेंस. तो आई वुड से कि हर कैप्टन में कुछ आइडियाज़ होते हैं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ पीपल वी वांट. इमरान के थे, इंजमाम के थे, बाबर आजम के हैं. So there's always some resistance, लेकिन generally I think the system is working better. It's more reflective. अब एक छोटा क्लिक नहीं है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं. एंड आई थिंक कि अब वो टेलीविज़न पे भी इतना आता है कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हाइड अ प्लेयर कि जी इसको ले लिया, परफॉर्मेंस है नहीं. अब ये ज़रा मुश्किल हो गया है. इसी में मतलब अभी रिसेंटली नदीम फारूक पराचा की किताब आई है, फेथ सोल एंड सॉरी, बट जनरली उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट ये भी किया था, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जिस तरह टीम ने जीतना शुरू किया इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड लकीली एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट्स came into play, putting money into sports. Yes. And unfortunately hockey हमारी उस टाइम डिक्लाइन वाली साइड पे जा रही थी, and cricket 70s के बाद 80s में we had a very good team competing with West Indies. So do you think that also played a part? A lot of money was coming in and became a good employment opportunity as well? नहीं, I don't. I think 70s में तो it wasn't a very good employment opportunity. देखें, 70s में ज़्यादातर हमारे जो players थे, because they were so बिग इंटरनेशनल स्टार्स, तो वो तो जाके फिर इंग्लैंड में खेलते थे, एंड दैट वाज मोर लुक्रेटिव फॉर देम. राइट, समर आप खेल रहे हैं उधर. मुश्ताक मोहम्मद ने तो कहा था मैं छोड़ नहीं सकता, आई हैव टू कंटिन्यू प्लेइंग हियर. मुश्ताक थे, इंतखाब, इमरान, माजिद, मियादाद, ये सारे जो थे ना, दे प्लेड फॉर द इंग्लिश काउंट्री, सो दे यूज्ड टू मेक मनी दैट वे. और फिर वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट में भी यही हुआ, एंड इट एक्चुअली टुक जनरल ज़िया टू से टू देम कि नहीं भाई, आप वापस आ जाएं एंड वील वर्क आउट योर टर्म्स एट्सेट्रा, क्योंकि वो बोर्ड ने तो कह दिया था कि वी आर नॉट एबल टू पे यू इनफ फॉर दिस. सो ये टेंशन रहा है, एंड आई थिंक इट स्टिल रिमेन्स टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हमारी प्लेयर्स एसोसिएशन है नहीं. सो दे हैव टू फाइट फॉर दीज थिंग्स इंडिविजुअली ऑलमोस्ट. और कंट्रीज़ में प्लेयर्स एसोसिएशन है. सो कमर्शलाइजेशन आई थिंक 80s में शुरू हो गया था इन साउथ एशिया, particularly after India won in 1983. और फिर there's a big shift, South Asia becomes very important. लेकिन I don't think कि कोई ख़ास push आया था from commercial houses etc. I think they played a big role through Habib Bank, और इनसे support आया था, PIA departments. So that was important, इनको employment मिलता था, but it wasn't lucrative. इमरान के time में, I mean, today he would be a superstar. Right? लेकिन he missed that period when sponsorships मिल रहे थे और media was involved. So this set of superstars actually missed out on that. So just like I think इस हमारी late 90s की जो generation है, वसीम for instance never played T20. Saeed Anwar is one of my favorite all time my favorite players. He is the player जिसकी वजह से मैंने cricket में I fell in love with. But he was a perfect T20 player. Never got to play. So आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा सर, इसमें एक बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, दूसरा बात हम आते हैं उस साइड पे, इम्पैक्ट ऑफ क्रिकेट ऑन, क्योंकि यू मेक अ वेरी एक्सीलेंट आर्गूमेंट जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आपने मैच फिक्सिंग के हवाले से बात की है, और जनरली जो सोसाइटी में हमारी करप्शन है, एक्सेप्ट एंड यू नो दीज न्यू किड्स, बट आमिर वगैरह, नॉट बट एग्जैक्टली, बट आमिर आसिफ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड. सो उसको हम एक साइड पे रखते हैं. हम बाद में बात करें कि क्रिकेट का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कैसा रहा है, स्पेशली क्योंकि यू मेक एन एक्सीलेंट आर्गुमेंट कि आप पॉलिटिक्स को साइड पे नहीं कर सकते. जनरली एक बड़ा हमारा इंडिया को लेके बड़ा एक फेमस स्लोगन है कि जी पॉलिटिक्स और क्रिकेट को साइड पे रखें, बट इज इट रियली पॉसिबल इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और इंडिया टू कीप पॉलिटिक्स ऑफ लेट्स से कंट्री एंड क्रिकेट? हाँ, no, I don't think. I think sport is political. There's no doubt about it. In the past, what was happening is कि आपके अगर political relations कोई ख़ास अच्छे नहीं थे between India and Pakistan, let's say India and Pakistan की, it's most evident there. India and Pakistan के आपके relations अच्छे नहीं थे, तो लेकिन आपके boards के relations अच्छे थे. And what that meant is कि even if there was tension between the countries, क्रिकेट की वजह से there was an avenue to diffuse that. और उसका एक जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो जयपुर में जो
General Zia गए थे, and we had a big build up of troops on the border, और एकदम उसके बाद they sort of disappeared क्योंकि ज़िया और राजीव गांधी की बात हुई and they were able to talk at the match. तो वो एक avenue रहता था. So I think that was a very important thing. अब आज वो नहीं हो रहा है. Today politics has trumped cricket almost, right? I mean, वो तो अब the boards are not really talking, the countries are not talking. तो इस माहौल में we can't expect cricket to give us the breakthrough. It can work in tandem with politics, लेकिन ये हम ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बाबर आजम और विराट कोहली साथ बैठेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन. वी वुड लाइक दैट. इट्स अ गुड थिंग. इट रिमाइंड्स अस कि क्या हो सकता है हमारी जो रिलेशंस हैं. बट वी आस्क टू मच ऑफ आवर क्रिकेटर्स इफ़ वी थिंक कि इनके थ्रू ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी. सर आई थिंक वो आपकी बात पे पहले आते हैं कि 2003 में, क्योंकि वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट था एंड यू रोट अबाउट इट इन योर बुक एज वेल. सो आई थिंक दैट इज व्हाट ब्रिंग्स अ बेट चेंज एट अ लार्जर इम्पैक्ट, कि लोग आ जा रहे हैं, 25,000 लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं. उस तरह से होता है. सर एक यहाँ पे मेरा पर्सनली माइंड में क्वेश्चन आया था, क्योंकि आपने राइवलरी की बात की है. जनरली पाकिस्तान एक राइवल की बात होती है, बिगेस्ट राइवलरी इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ दैट. बट जिस तरह आप बात करते हैं बोर्ड के ताल्लुकात अच्छे थे, शुरू में जो हमारे प्लेयर्स थे वो कोई यहाँ से वहाँ गया हुआ था, किसी ने दोनों कंट्री से 11-12 प्लेयर्स ने खेला हुआ है. बट ये जो राइवलरी इंटेंसिटी हमारी आती है, इट कम्स फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पे देयर इज ब्लड, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर आर वॉर्स, देयर इज पॉलिटिकल टेंशन. अभी भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हमारी एक जर्नल में आपको बात करूँ, मैसेज पे लोग बैठ के देखते हैं तो इट्स लाइक वॉर. सो इस राइवलरी में इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स राइवलरी, इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल राइवलरी, जहाँ पे हम शायद स्पोर्ट्स को एक एवेन्यू बना लेते हैं अपना एग्रेशन शो करने का. इफ आई एम नॉट So, I mean, that's the case for every sport, right? जब इंग्लैंड और जर्मनी खेलते हैं फुटबॉल में तो यही चीज़ होती है. एंड आई थिंक देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक by the American author Marcuse, who writes that this sport is war without the shooting. Right? And that's what it is basically. Or it's symbolic war, आप कह दें. But I think in the last few years ये थोड़ा बदल भी गया है. Both sides have become a little bit more mature about it. जो बदमज़गी होती थी वो कम हो गई, and I think that's a good thing. I think the players realize it most of all कि we're trying to our best. कभी हाँ आप जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. हमारी तरफ तो ज़्यादा ही एक्सेप्टेंस हो गया है बिकॉज आवर टीम हैज़ नॉट बीटन इंडिया दैट मच. अब थोड़ा चेंज हो गया है इन द लास्ट कपल ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि there's a political rivalry, but there's also, if you look at the other side, there's also a strange, एक ऐसी दोस्ती भी है जो और countries में नहीं है. And that's because we did separate, but for thousands of years we were one also, and we had many things that we share. अब भी हम ये share करते हैं. We speak similar languages, our cultures are similar, we treat our parents in the same way. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो when you give people a chance कि आप साथ आ जाएं तो वो एकदम एक the desert blooms as it is. यही हुआ 2003 में. We hadn't received India for many years. लोग वापस आए. It was as if कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था. And by the way, even if you go back to 1952, जब पाकिस्तान का पहला टूर हुआ इंडिया, you would have expected कि भाई अभी पार्टीशन हुआ है. A million people have died, 20 million people have crossed, violence, killing, brutal. कोई मसला नहीं. They were thrilled to receive us. They gave us such protocol. और जब वो आए तो हमने भी यही किया. So we have a cultural, जो कहते हैं ना, cultural capital है. And I hope that we are able to keep that living, क्योंकि in the past तो we used to meet each other. लेकिन अब एक जनरेशन बन गया है which has never met each other and look at each other very much more suspiciously. तो वो एक मसला हो रहा है. सर एक और जो मेरे ज़हन में आ रहा है, क्योंकि यू हैव रिटन, आई एम येट टू रीड इट, आई एडमिट, बट यू हैव रिटन एक्सेलेंट बुक ऑन सिनेमा एज वेल. तो उस पे जब हम देखते हैं तो जो
कहीं एंटीडोट्स मैंने किसी आर्टिकल में पढ़े या कुछ पढ़े, तो उसमें पाकिस्तानी और इंडियन मूवीज़ के लिए भी स्टार्ट में यही था कि यहाँ पे वो टांगा के ऊपर वो लगा के पोस्टर लगा के पूरे शहर में घुमाया करते थे कि इंडिया की मूवी आई है, एंड वी यूज्ड टू एक्सचेंज मूवीज़, और सिनेमाज वगैरह होते थे। अर्ली 50s की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर यही जब आप 2003 वाले बात कर रहे हैं, तब हमारा वो भी एक एक्सचेंज शुरू हुआ आर्टिस्ट का, विच लास्ट टिल फ्यू इयर्स बैक, और अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ब्रेक लगी हुई है। सर आजकल अभी हम जो बात कर रहे हैं, बिफोर मूव फॉरवर्ड, 2009 और 2010 वर ऑब्वियसली वेरी टर्बुलेंट ईयर फॉर पाकिस्तान। एक हम पे अटैक हुआ, देन वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स, एंड देन ऑब्वियसली 2010 का हमारे पास आता है। तो करप्शन इज़ वन थिंग जो कि अभी भी अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी फॉर्म में हमें हर पीएसएल से पहले किसी एक प्लेयर के ऊपर कोई ना कोई स्मॉल एक्विजिशन, माइनर एक्विजिशन, बट वी स्टिल हैव प्लेयर्स एक्टिवली प्लेइंग जिन पे कोई एलिगेशंस थे या उनको सज़ा भी हुई थी। थ्रू आउट आप इसको किस तरह देखते हैं? आई वुड से मतलब करप्शन इन क्रिकेट, उसका जो हम कह लें बेसिक रीजंस थे, फैक्टर्स थे, वो चेंज हुए हैं या इट्स द सेम थिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट लाइक 30-40 years? It's a very good question. I think कि 90s में ये चीज़ it took off really, और वो इसलिए था कि कमर्शलाइजेशन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हो गई थी और बहुत जल्दी हो गई थी. Something that started I think जब इंडिया ने 83 में वर्ल्ड कप जीता, फिर हमने 87 में वर्ल्ड कप, एंड देन 92 we won it. तो उसके बाद there was a lot of commercialization, lot of money did come into, और मनी चेंजेस एवरीथिंग, राइट? तो वो एक वैल्यूज़ को भी चेंज कर लेते हैं. उसके साथ साथ आप देख लें कि दिस आप सोसाइटी इज़ अ करप्ट सोसाइटी. हर जगह आप देखें करप्शन है. गवर्नमेंट्स आते हैं, दे से वी आर गोइंग टू रिमूव करप्शन, दे गेट रिमूव्ड फॉर करप्शन. लेकिन डेली बेसिस पे आप देख लें, आपको स्कूल की जगह चाहिए, यू हैव टू पे फॉर इट. यू वांट अ हॉस्पिटल प्लेस, यू हैव टू पे फॉर इट. यू वांट अ गैस कनेक्शन, you have to pay for it. तो ऐसे माहौल में people grow up thinking there's nothing wrong with doing certain things. और आप कभी ये अगर if you don't say to them कि भैया this is not what is acceptable, they'll continue doing it. उनको तो कभी ये महसूस ही नहीं होता कि this is something that is wrong. And then you're picking up, young, ambitious men in the cricket team who have not been given any mentorship. Leadership, individuals make a huge difference here. Imran Khan के दौर में ये नहीं होता. It wouldn't, because he was all powerful. You could not cross him. लेकिन when the leadership changes और changes again and again, instability होती है, insecurity होती है, एक sportsman का life भी it's short time, right? Then you start thinking कि I need to make as much money as I can at the right time. तो look around, I'm not surprised. सब जगह corruption है, तो cricket में क्यों ना हो? So I don't think things have changed. इसमें थोड़ा बहुत there's much more spotlight, and I think that has made a difference. आपकी टीम भी थोड़ी बदल गई है. आई थिंक नाउ दे आर बेटर पेड, दे आर बेटर मॉनिटर्ड, दे आर मोर अवेयर ऑफ इट. तो ये थोड़ा कम हो गया है. बट लेट्स फेस इट, इट डजंट हैपन ओनली इन क्रिकेट. फुटबॉल में भी होता है, टेनिस में भी होता है. सो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड आई थिंक कि इसमें यू हैव टू जस्ट कीप बिल्डिंग अवेयरनेस, यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग इट. लेकिन those conditions are still there. Leadership is important. मिसबा के दौर में he had again brought about a certain, एक decency आ गई थी टीम में. And that's very important. We keep forgetting कि individuals have a major impact on institutions and cultures and organizations. So उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. And that is important, I think. सर इसी में मिसबा ने, उनका एक अपना स्टाइल था, ऑब्वियसली कैरी टीम इन ए डिफरेंट वे. इंजमाम वाज अ वेरी डिफरेंट कैप्टन, नॉट इन जस्ट ऑफ स्पोर्टिंग टर्म्स, बट वो एक ओवरऑल हमारी एक फील और लुक बन गई थी टीम की. रिलीजियस हम ज़्यादा हो गए थे, और उसमें भी आपने रिडेम्पशन का एक बनाया. तो उस पर आई वुड लाइक यू मेक कमेंट ऑन दैट कि वो फिक्सिंग से लेके फिर हम उसको एग्जैक्टली. तो वो दीज टू आर कनेक्टेड, राइट? आई मीन we can't say who did match fixing, who didn't. एक हमारे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 90s में काफ़ी प्लेयर्स हैं, उनके नाम हैं, क़य्यूम रिपोर्ट जो है. तो वी कैन अस्यूम कि कुछ ना कुछ हुआ था.
So my own reading of it is that some of these players, एक तो पैसे एकदम इतने ज़्यादा आ गए, you start living a life which is full of excess. कुछ तो इंग्लैंड में खेलते थे, उधर भी एक्सेस हो रहा है, इधर भी हो रहा है, एंड सम ऑफ देम हैव ओपनली टॉक्ड अबाउट इट. मुश्ताक अहमद की बायोग्राफी में लिखा है कि आई वाज जस्ट ऑफ द रेल्स, मैं जो कर रहा था. सो एक emptiness आ जाती है वो फेम से, एंड हैविंग गेन्ड ऑल ऑफ दिस. सो हाउ डू यू कॉम्बैट दैट? एंड आई रिमेंबर कि सईद अनवर आए थे मेरी तरफ आफ्टर ही हैड बिकम मच मोर रिलीजियस. ही हैड दैट ट्रेजेडी इन हिज लाइफ ऑल्सो. तो उनने यही कहा था कि कि एक एम्प्टीनेस आ जाती है, व्हाट डू यू डू? उसी दौरान there was a movement into the team of तबलीगी जमात. अब तबलीगी जमात का रोल ही ये होता है कि आपको वो ये कहें कि हाउ डू वी ब्रिंग यू बैक टू द पाथ. तो वो एक कनेक्शन बन जाता है. नाउ व्हेन यू हैव 2 or 3 सीनियर प्लेयर्स हु आर इंटरेस्टेड, तो वो बार बार लोग आते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. सो आई थिंक उधर से ये 2, 3, 4 कंडीशंस थी. लीडरशिप, इंजमाम वाज वेरी मच इन फेवर. ये मैच फिक्सिंग का जो टेंट आया था, इसको कैसे हटाएं हम. फीलिंग्स ऑफ फेम एंड मनी, और इसके साथ व्हाट डू वी डू विद दिस. तो ये एक बन गया था, एंड एज अ रिजल्ट इट वाज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर religiosity to grow. कि नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली ये हम मानते हैं कि one of the only ways for us to show we're good is to be religious. But you can be good in many ways. You don't have to be religious. लेकिन ये लोग खुश हो जाते थे. हाँ, तो I think कि उस दौरान this was a big issue. And then these things eased a little bit. इंजमाम भी रिटायर हो गए, मैच फिक्सिंग भी कम हो गई, लेस स्कैंडल्स वर कमिंग अप. तो वो फिर थोड़ा सा it stabilized. I don't think it's something that was endemic. So lastly, I would like to take your comment on, because you have researched and you have avid interest in cricket as well. If you look at Pakistan's history, generally sporting history, so वो जो आपने एक इंटरव्यू में बात भी की थी कि I think you quoted खान साहब कि Pakistan wins in spite of the system. So coming back to that point, if I look at Pakistani cricket history, so I see a lot of resilience coming back from one tragedy after another. कैरी पैकर तो खैर एक बहुत बेसिक सी मतलब थी, लेकिन वहाँ से भी वी केम बैक, वी वॉन द वर्ल्ड कप देन, एंड देन स्पॉट फिक्सिंग. वी लॉस्ट आवर probably the best left arm bowler कि आप दोबारा कैप्टन नहीं बन सकते, and he still is reluctant to take a position in PCB कि कल को भी इशू बन जाए. Then obviously big 9 आता है, 10 के हमारे इंसिडेंट आते हैं. So how do you see that as a social scientist, as a cricket fan? I think it's both good and bad. We've always won against the odds. 92 में आपको पता है, one false step and you were out. लेकिन फिर 2009 में भी हम जीते T20 after devastating 2 or 3 years, right? और आपने फिर you lost cricket at home for 10 years. Right? ये कोई छोटी चीज़ नहीं है. For a country to lose any domestic or international cricket at home, domestic तो नहीं, international, is very difficult to survive. But you didn't survive. You actually became the number 1 ranked test team. You won tournaments, Champions Trophy आपने जीती है. You remained amongst the top teams. तो ये resilience तो बहुत है. I think it is astonishing कि we are able to do that. Or it's the passion of the people for the game that keeps this running. I think on the dark side कि आप कितना ये ऐसे करेंगे ना, you can't keep beating people and saying कि उठो. किसी वक्त पे तो इफ़ेक्ट आएगा ना आप पे. और मुल्कों में तो ये नहीं हो रहा है. दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट गेम, दे आर गोइंग डिफरेंट प्लेसेस, दे आर ब्रिंगिंग मेंटल कंडीशनिंग कोचेस. ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्टेडियम्स आपके अच्छे हो रहे हैं, अकेडमीज़ बन रही हैं. तो पाकिस्तान इज़ विनिंग दीज गेम्स, डूइंग वेल, डिस्पाइट द फैक्ट कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है. आई मीन कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हुआ है. बट आई विश वी वर एबल टू डू मोर, बिकॉज आई थिंक the country and the team and sports
demands that we should be doing more. We should be giving more, क्योंकि हमें cricket से इतना ज़्यादा मिलता है in return. So resilience is good, लेकिन you can't keep doing this to your team. So one last cliched question: what to expect from your book? अभी अगर कुछ पन मिस हो गए, but generally, if I've missed anything, if you want to. Well, I wrote the book in such a way that it is not only for an academic audience. I wanted it to be accessible to a large audience. So my hope is that if you read this, you will, as a cricket lover, you will understand cricket better, and you will understand Pakistan better. Right. And particularly for an international audience, I think that they will understand both these things better if they read the book. That was my intention. Okay, here's something, you can read it and think, okay, this is what Pakistan is about, and this is what cricket in Pakistan reflects about Pakistan. Sir, I totally second that, because I've read a couple of books, but with due respect, some of them are too much into history of what happened, the first club, and then evolution in cricket of Bengal and Bihar, and after a while it becomes a bit boring because a lot of stats. But we have an excellent book by Usman. He wrote a beautiful book, and this looked like more like a social commentary as well as obviously going back to history of Pakistan. But sir, thank you for writing this first of all, and thank you for giving us time today. It was lovely talking to you, and we hope to see you next time as well with your next book. Inshallah. Thank you so much. Okay, thank you so much. Next time, till next time, Khuda Hafiz.